Good morning, everyone. Now, today we will be discussing fenugreek. Fenugreek. It's a really very useful spice, fenugreek. तो मेथी की बात करेंगे, मेथी के दाने. So fenugreek is very good spice. It's a very well-known spice. We know for the diabetes. It's very good for the joint pain. डायबिटीज के लिए और जॉइंट पेन के लिए गजब का है. डायबिटीज वाले लोग नियमित रूप से मेथी का सेवन करते हैं तो डायबिटीज कम होने लगती है. और डायबिटीज के हम और भी जो कई पाउडर बनाते हैं उसमें भी मेथी डालते हैं. सो वी पुट द फेनुग्रीक इन द मेनी हर्बल पाउडर्स व्हाट वी आर मेकिंग फॉर द डायबिटीज पीपल. Even the fenugreek is very good for joint pain. So we will be soaking 1 teaspoon fenugreek in the water overnight. Then we are boiling it in the morning. Then drinking every morning. It's a very good for joint pain. रात्रि को इसे भिगोना, 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 गिलास पानी में और सुबह उबालकर आधा करना और पी जाना. ये जॉइंट्स के लिए काफी गुणकारी है. फेनुग्रीक का पानी बनाकर ये इसी पानी से अगर बाल धोए जाते हैं तो बालों में चमक आ जाती है. So if we are boiling the fenugreek in the water and washing our hair, so our hair are become shiny. It's a very good for the shiny hair. The fenugreek has been considered as a very good source who improve the sexual power libido in the male because of raising the testosterone hormone. तो पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाता है. पुरुषों में पुरुषों का हार्मोन बढ़ाता है, महिलाओं में महिलाओं का हार्मोन बढ़ाता है. So it's raising the hormones. That's why fenugreek is also very good for the male who want to improve their sexual power. So all the medicine, the herbs and the spices good for sexual power. Definitely they will be very good for the heart. With the regular consumption of the fenugreek seed, one is getting the very good benefit in the weight loss. If you remember, I told you earlier, मैंने आपको एक weight loss का formula बताया था कुछ दिन पहले. So this formula is having 3 things. Number 1, kali ziri. Number 2, ajwain or the carom seeds, celery seeds. And number 3, methi or the fenugreek seeds. तो ये 3 चीजों का मिश्रण है. इसमें सबसे ज्यादा मेथी है जो है 250 ग्राम. Ajwain is 100 gram only and the kali jiri is 50 gram only. If we are roasting all the 3, then grinding them, then mixing them, and from this combination, if we are taking half teaspoon, only half teaspoon once in a day, like either early in the morning or before going to sleep. It's a very good for the joint pain. या तो हम इसे सुबह उठकर ले लें या रात्रि को सोने के पहले ले लें. तो मेथी हमारे संधियों के लिए बड़ा गुणकारी मानी जाती है. हम मेथी का पानी बनाकर उससे बाल भी धो सकते हैं और अपने जॉइंट्स को भी मजबूत बना सकते हैं. So now my question is from all of you. Why the fenugreek is recommended for the female after delivery?
जब फीमेल बच्चे को डिलीवर करती है तो उसे फेनुग्रिक की चीजें खाने के लिए कहा जाता है। मेथी के लड्डू और मेथी की चीजें क्यों कही जाती हैं? एनीवन नोज दैट? डू यू नो? यू माइट बी नोइंग दैट वी आर टेलिंग या। So the cause is to improve the lactation, improve the milk production. The female taking the fenugreek post delivery, it's a wonderful for improving the lactation. यह दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए काफी गुणकारी है। So as per the ingredient availability in the fenugreek में पाए जाने वाले तत्वों के कारण fenugreek is increasing the breast milk. So it's a very good for the newborn babies because they are having enough milk. उनको काफी पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है। So fenugreek has been proven wonderful for this purpose. So fenugreek is increasing the milk production. Okay, so it has been told 3,500 milligram fenugreek should be taken every day. तो गर्भावस्था के पश्चात डिलीवरी के समय महिलाएं मेथी के लड्डुओं का सेवन करती हैं। इससे उन्हें 2-3 फायदे होते हैं। पहला उनको फायदा होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होता है। दूसरा फायदा होता है कि उनको जॉइंट्स पेन नहीं होता। दे एबल टू प्रिवेंट द जॉइंट पेन एंड दे आर able to produce more milk. So there are two benefits of the fenugreek. So after the delivery, it's really very good because fenugreek is not only improving the milk production, but it's also improving the anemia. Many females might suffer with the anemia, iron deficiency anemia after the delivery, because during the delivery, there are lots of blood is already lost. डिलीवरी के दौरान काफी ब्लड उनका लॉस हुआ है। तो जब फेनुग्रिक तो उनका मेनी फीमेल्स आर हैविंग वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी पोस्ट डिलीवरी। So sometimes we are thinking, okay, this is the normal thing and it will happen with everyone, but if we maintain the iron, then might not be happen, like might not be fatigue, weakness and the irritability. So the fenugreek is one of the great source to improve this. Fenugreek एनीमिया को इंप्रूव करने के लिए काफी गजब का काम करता है, especially iron deficiency anemia. So fenugreek is having high mineral contents. The herb is rich in the iron, so it is working for the iron deficiency. ये iron deficiency में काम करता है. Not only this, fenugreek is also having many other nutrients like the magnesium, vitamin B complex, vitamin B6 and the manganese. ये कई सारे तत्व पाए जाते हैं जिनके प्रभाव से यह काफी गुणकारी हो जाता है। The manganese is the element, because of the availability of the manganese, this fenugreek is also very good for the diabetic person. Vitamin B6 is available in the fenugreek, that's why it's very good for the anemia. इसमें विटामिन B6 पाए जाने के कारण ये एनीमिया के लिए अच्छा है और मैग्नीज पाए जाने के कारण यह डायबिटीज के लिए अच्छा है। So in this way, fenugreek is wonderful after the delivery. Even any female is suffering with the iron deficiency can take it anytime. कभी भी इसे लिया जा सकता है, चाहे कभी भी किसी भी समय लिया जा सकता है। Now, reduction of the PMS, premenstrual symptoms. What is the premenstrual symptoms?
So before starting every cycle, this is a 28-day cycle, and the first 5 days are the menstrual bleeding. This is the time of menstrual bleeding. So every month, when the menstrual bleeding starts, before that, just before that, 3-4 days, the females are getting the sign of PMS, premenstrual symptom. तो महिलाओं के शरीर में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के पहले कुछ पीएमएस के लक्षण पैदा होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जैसे कि इरिटेबिलिटी, जैसे कि एंगर, शरीर का तापमान बढ़ जाना, गर्मी महसूस होना, फीवरिश जैसा लगना. So the female might be suffering, getting these all symptoms. So as soon as bleeding starts, the female are getting relief. जैसे bleeding start होती है तो female को relief मिलता है. But during this PMS time, if we are giving the fenugreek, it's doing the reducing the symptom of the PMS, and the female are getting relaxed. Sometimes these symptoms are too high and it's unbearable, then they are taking the painkiller. It's really too high. But the fenugreek is avoiding the need of painkiller. It's a wonderful for this purpose. तो फेनुग्रीक के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं कोलिन. This is a very good contents found in the fenugreek. So this choline is very good for nervous system. That's why fenugreek has been proven very good for brain, very good for nervous system, very good for mental fluctuations, very good for brain disorders. फेनुग्रीक बड़ा ही गजब का काम करता है इन सब पर. कारण क्योंकि ये ब्रेन का टॉनिक है. तो नियमित रूप से आप फेनुग्रीक का सेवन करते हैं तो आपके ब्रेन को भी टॉनिफिकेशन मिलता है. So in the fenugreek, not only choline, but there are some other elements, other contents are available, like the isoflavones. And the diazoxanine. कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये तत्व ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं. They are working like little estrogen. So when the female are taking fenugreek, because of the estrogen hormone, they are getting relief in the cramps and the discomfort and the sign of PMS. Ultimately, fenugreek is very good. So fenugreek can be taken before starting the menstruation for avoiding the sign of PMS. Now next, the fenugreek is good for skin as well as the hair. I told you ये skin के लिए और hair के लिए बड़ा गजब का है. So for this purpose, what we are doing, we are soaking the fenugreek in the water for overnight or for 4 hours. हम फेनुग्रीक को पानी में भिगो कर रखते हैं या तो रात्रि भर या फिर 4 घंटों के लिए. फिर इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाते हैं और स्किन के ऊपर लगाते हैं. Then we are grinding it and making the paste, applying over the skin, and when we are cleaning this skin the becoming very beautiful. It's removing all the unwanted dead cells, unwanted discoloration of the skin. It's a wonderful for skin, for the healing of the skin. जब फेनुग्रीक के इस पेस्ट को हम स्किन के ऊपर लगाते हैं तो बड़ा गजब का काम करता है. आप और भी कुछ चीजें मिलाकर उसमें एक फेनुग्रीक भी डालकर आप उसका भी फेस पैक बनाकर स्किन पर लगा सकते हैं. You can put the fenugreek seeds with the other seeds and you can apply over the skin with the purpose of skin enhancement. This is wonderful for this purpose. In this way, fenugreek is very good, whether you apply the paste or you apply the water.
चलिए आपने क्या किया कि फेनुग्रीक को पानी में भिगो कर रखा रात्रि भर या 4 घंटों के लिए, फिर उसे उबाला और इसका पानी बनाया। उस पानी को भी अगर आपने स्किन पर लगाया या बालों में लगाया तो स्किन पर लगाया तो स्किन में चमक आती है, और बालों में लगाया तो बालों में चमक आती है। ऐसी चमक आती है जैसी की चमक कंडीशनर लगाने के बाद भी ना आए, ऐसी चमक। So if you are soaking the fenugreek overnight in the water or the 4 hours, then boiling it for a while, then with this water, if you are washing your skin, you are washing your hair, so there are very good shininess. In the hair, it's bringing the shininess like the conditioner. It's really very wonderful for the skin and the hair. Skin और hair के लिए गजब का है. And it's also clear the fenugreek is very good for clearing the sinus. So someone is suffering with the stuffed nose, so it will work like a expectorant. It will remove the kapha from the path. It will remove the phlegm from the lungs and the sinuses. It will remove the stuffy nose. Many times person is feeling lots of heaviness in this part because of the sinuses. कई बार लोगों को ऐसा बड़ा भारी लगता है, नाक बंद रहती है, नाक में कफ जमा रहता है। उस अवस्था में फेनुग्रीक का सेवन किया जा सकता है। फेनुग्रीक के सेवन से कफ निकल जाता है क्योंकि फेनुग्रीक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, फिल्म को निकालता है। कैसे लेंगे आप फेनुग्रीक को? आपको जब भी कफ हो तो आप खाना बनाते, खाने में फेनुग्रीक का तड़का लगाइए, या फेनुग्रीक को रात को भिगोकर सुबह उसे बॉईल करके उसका काढ़ा पीजिए। So whether you put the fenugreek in your meal, like while frying the meal, you can put the fenugreek. The other thing, you can soak the fenugreek in the water, and in the morning time you can boil it and drink it. It's a wonderful for clearing your sinus. आपके sinus को clear कर देगा। 1 minute. The second thing about the fenugreek, it's improve the blood sugar regulation, because I told you the fenugreek is having magnesium. Magnesium is very good for maintaining the glucose level. Especially it's a very good for the type 2 diabetes. ये type 2 diabetes के लिए काफी गुणकारी है. It's a very good for the type 2 diabetes. So the person suffering with the diabetes can experience this if they are taking the fenugreek decoction every day, preferably in the morning. So soaking 1 teaspoon fenugreek in the 300 or 400 ml water, then boiling it till it remain half. Then drinking every morning, first thing in the morning, and after that don't take anything for 1 hour. It's a wonderful for the diabetic person. ये डायबिटीज वालों के लिए काफी गजब का काम करता है। Now the most important task about the fenugreek, fenugreek is very good for maintaining the bad cholesterol. So if the person is taking regular fenugreek, it's removing the unwanted blockages from the capillaries. हमारे capillaries में से ये फालतू के blockages को निकालता है, blood circulation को बढ़ाता है. It's removing the unwanted blockages, improving the circulation. That's why we can see fenugreek is the very essential part of our kitchen. हमारे kitchen का बहुत ही महत्वपूर्ण part है, लेकिन थोड़ा हम awareness develop करके और इसे ढंग से प्रयोग करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. It's a wonderful for the cholesterol. In the fenugreek, we are having high level of fibers, high level of fibers. So it's also very good for the digestion. And if you take the fenugreek, you will be feeling very good in the constipation and the digestion. So it's a wonderful for bad cholesterol as well as for the digestion.
ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए और द डाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है, बिकॉज इट्स क्लियरिंग द पाथ ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स को साफ करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर के कचरे को क्लीन करता है। It's removing the unwanted fat, unwanted cholesterol, unwanted depositions from the body. That's why it's also very good for the heart health. इसलिए हमारे हृदय की के स्वास्थ्य के लिए भी गजब का काम करेगा। तो जो लोग भी नियमित रूप से मेथी के दानों का सेवन करते हैं, आप देखेंगे उनके हृदय की हेल्थ काफी सुधर जाती है। So fenugreek is improving the condition of the heart very nicely. The heart will be pumping the blood very nicely. The efficiency of heart will be increased because heart will be good and there is no any hindrance in the path. So when heart is pumping, there is no unwanted pressure on the heart. So fenugreek is very good for the patient suffering with a cardiac condition. So we can understand the fenugreek is really very wonderful. इसके इतने गुण हैं कि गजब का है। In this way, so fenugreek is very good for the breast milk. Fenugreek is very good for improving the metabolism, diabetes and the overweight. And it is not only working for the diabetes type 2, it's also working for the diabetes type 1. ये दोनों प्रकार के डायबिटीज में काम करता है। कहते हैं कि अगर कोई भी डायबिटीज का व्यक्ति प्रतिदिन 50 ग्राम मेथी के दानों का सेवन करे डिनर के समय, so the people with the diabetes type 1 is really very complicated, but the people with the diabetes type 1 मतलब जब इंसुलिन का निर्माण कम होता है उसे टाइप 1 कहते हैं, when the formation of insulin is lesser. So the person is taking 50 gram fenugreek seeds converted in the powder form. So we are roasting the fenugreek and making the powder. तो मेथी के दानों को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेते हैं और 50 ग्राम की मात्रा में जब लंच और डिनर के बाद देते हैं। 50 ग्राम की मात्रा कभी कभी लगता है कि ज्यादा है, किसी का वजन कम है, पतला है। In that way, we are reducing the dose till the 20 gram. Okay. So we can see that within 10 days, we can see the significant improvement in the diabetes and the cholesterol and even in the weight. डायबिटीज में, कोलेस्ट्रॉल में, वजन में, तीनों में हमें अंतर दिखाई देता है। So fenugreek is improving the insulin secretion and even the functions of the insulin. Fenugreek is having very high fiber, so it's really very wonderful for the diabetes patients. Because fenugreek is also controlling, we already told you, it's removing the unwanted fat, cholesterol. So we are also using it for the weight control. हम इसे वजन घटाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। Okay. So these are the few symptoms, like we already have discussed. For the various conditions of the heart, we are using the fenugreek. So this was the quick discussion of the fenugreek. अब हम आगे की बात करेंगे. Let's move ahead, proceed forward. Now we are talking about the black pepper, peppercorns or the black pepper or the काली मरी. अब हम काली मिर्च की बात करेंगे. हमारे किचन में पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन स्पाइस जो बड़ा ही गुणकारी है. The black pepper is pungent in the taste. We know that it's a pungent. ये तीखा और गर्म होता है, काफी तीखा और गर्म होता है black pepper. So as per the Ayurveda, there are 6 rasas. So black pepper is pungent. So it is because if it's a hot and pungent, क्योंकि गर्म है, pungent है, इसके कारण से हम इसका प्रयोग
उन सभी जगह करते हैं जहां भी हमें लगे कि भाई इसे पचाना है, खाना तो खाया लेकिन पचेगा कैसे, तो हमने ब्लैक पेपर डाल दिया, ये गर्म है, इससे अग्नि हमारी प्रदीप्त होगी और खाना पच जाएगा। So when we are putting the black pepper, it's igniting the digestive fire. So we can digest anything. Suppose you are cooking the rice. आप चावल पकाते हो और चावल में अगर आपने ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल दिया तो जो भी चावल खाएगा वो इसे आराम से पचा लेगा। So if the person eating the rice, you are putting a small amount of black pepper, then will able to digest quickly without any discomfort. Because black pepper is hot and pungent and it's improving the digestion. So black pepper is very good for removing the unwanted dampness from the body. हमारे शरीर से फालतू का dampness और कफ निकालने के लिए बड़ा ही गुणकारी है। फालतू का कफ, dampness, भारीपन निकाल देता है। The person who is having overweight can take the black pepper every day. It will reduce the kapha and it will reduce the weight. तो जब भी कोई महिला पुरुष दोनों, लेकिन स्पेशली महिला मोटापा का शिकार होती है, सफरिंग विद ओवरवेट और ओबेसिटी, it might be because of any reason, but it also might be because of hypothyroidism. Then we are giving her black pepper, or we are giving the trikatu. Trikatu is the combination of dry ginger powder, black pepper powder, and the long pepper powder. So we are taking the three different powder, mixing in the equal quantity. Then this is the trikatu is ready. Trikatu is very good digestive powder. It's removing all the undigested food. It's a very good. ये बहुत ही शानदार है त्रिकटु। अगर हम त्रिकटु का प्रयोग रोज सुबह खाली पेट कराते हैं, करीब 2 ग्राम त्रिकटु का पाउडर, 2 से 3 ग्राम त्रिकटु का पाउडर कोई प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट ले तो पूरा कफ और वजन निकल जाता है। सो वेदर द पर्सन सफरिंग विद कफ एंड कोल्ड और सफरिंग विद ओवरवेट कैन टेक द त्रिकटु पाउडर every morning because black pepper is very good for cough and cold. So I've seen the significant improvement with a female having hypothyroidism, and if they take the trikatu, then within months they are getting very good relaxation in the thyroid reading. We are taking the blood report and we are looking the results as well as weight. तो जब हम त्रिकटु का सेवन कराते हैं, वजन में भी फायदा मिलता है, थायराइड में भी। So black pepper is very high in antioxidants. So when you are eating the black pepper, it's remove all the unwanted depositions. So it's preventing the cancer. ये कैंसर को प्रिवेंट करता है। ऐसा माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से टर्मेरिक प्लस ब्लैक पेपर इन दो का सेवन करता है, इफ द पर्सन इज टेकिंग रेगुलरली टर्मेरिक एंड ब्लैक पेपर, दे आर वेरी गुड फॉर कैंसर or they are removing all the unwanted blockages from the body. They can remove unwanted kapha, unwanted blockage from any part of the body. They are very good. Turmeric and black pepper combination. इन दोनों का combination गजब का काम करता है. So what you can do, you can make the turmeric water. You can make the hot turmeric water. आप गरम टर्मरिक यानी पानी में हल्दी डालकर उबाल लीजिए, आधा चम्मच हल्दी को पानी में डालकर उबाल लीजिए. Boil the turmeric with the water. Put pinch of black pepper, and you can put the honey for the taste.
and drink this like a herbal tea. It's a wonderful for the patient if they are having blockage, if they are having any types of the unwanted gathering somewhere. अगर किसी को अपने शरीर को एकदम स्वच्छ बनाना है, सारी ब्लॉकेजेस को निकाल देना है, शरीर के एक एक नस नाड़ियों को फ्री कर देना है, तो हल्दी और काली मिर्च की हर्बल टी का सेवन करें. It's a wonderful, it's not only good for antioxidant. When I am telling antioxidant, it's a really very big word. Antioxidant means they are very good for us. They are neutralizing the free radicals, so they are very good for us. लेकिन सबसे मुख्य बात है कि ब्लैक पेपर का असर अगर आपको पूरा असर चाहिए तो जब आप इसका सेवन करें तभी पीसिए, तभी से ग्राइंड करिए, उसी समय से प्रयोग करिए. आप खाने में भी डालते हैं तो तुरंत ग्राइंड करके डालिए, तभी इसके वोलेटाइल न्यूट्रिएंट आपको प्राप्त होंगे. अगर आपने पहले से पीस के रख लिया तब भी गुणकारी है, थोड़ा कम है, 19-20 का फर्क है. So if you are grinding and keeping it for in the compartment, even it's good, but if you are grinding immediately, then it's a very highly beneficial. It's not only preventing the cancer, it's removing all the blockages happening anywhere in the body. It's also very good for the digestion. In the Panchakarma, it's a very important part. We are giving the black pepper. Panchakarma में तो इतना गजब का है, I will tell you. So there is a availability of the piperine. Piperine is in content found in the black pepper. Black pepper के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे हम पाइपरिन कहते हैं. और पाइपरिन के कारण ये हमारे पाचन को इंप्रूव करता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ाता है. So whenever we are eating the food is going in the stomach. In the stomach we are having 1.5 to 4 pH. And this pH is required for the digesting the food, but sometimes people are having mandagni, improper digestion, improper secretion of the hydrochloric acid. So with the help of black pepper, we can improve the hydrochloric acid, we can improve the digestion. So pinch of black pepper is very good in your meal. तो हम थोड़ी सी मात्रा में ब्लैक पेपर का प्रयोग करते हैं. और आयुर्वेद में हम जानते हैं कि पंचकर्मा में हम कई सारी दवाइयां पिलाते हैं. इन द पंचकर्मा वी आर टेलिंग द पेशेंट, ओके, you need to take the cow ghee, maybe in the 20 gram, maybe 40 gram, maybe 60 gram, maybe some more or less dose, whatever the dose is. So we are telling the patient take the ghee, but we also want to make sure the person should able to digest it properly. Then how? We are mixing the black pepper. तो हम आयुर्वेदा में कई प्रकार के प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम घी का सेवन कराते हैं. 20 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम और भी कुछ प्लस माइनस मात्रा में. तो हम बोलते हैं भाई घी को एक पात्र में ले लो. दिस द घी, दिस माइट बी द काउ घी, दिस माइट बी द मेडिकेटेड घी. Now we are putting pinch of black pepper. Then we are telling, okay, take it with the hot water. So when we are putting the black pepper pinch, then it's helping to digest the ghee little faster. तो ये घी को पचाने में मदद करता है. Not only this, suppose you are making the tea, even you are drinking your normal tea, normal milk tea, what we drink every day, you can put the pinch of black pepper, then you will able to digest this tea properly. So now many persons suffering with very different types of the indigestion. कई लोगों को बड़ा ही अलग प्रकार का indigestion होता है. So they can also take the tea, they can make the black tea. In this black tea, they can put 3-4 drops of lemon. They can put the pinch of black pepper, and they can put the 1 teaspoon cow ghee,
and take this tea. This tea is very good for the indigestion as well as for the acidity. तो अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी का शिकार है, इंडाइजेशन का शिकार है, मंदाग्नि का शिकार है, खाना ठीक से पचता नहीं है या खाते ही एसिडिटी होती है, तो काली चाय बनाए, 3-4 बूंदे नींबू की डाले, पिंच ब्लैक पेपर डाले और 1 चम्मच गाय का घी, इसका सेवन करें. It's a very good for improving the digestion. So black pepper, one of the great medicines, the Ayurveda. So it is also the very good part of our kitchen. हमारे किचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. जब हमें सर्दी हो जाती है तो घर में हमारे ब्लैक पेपर की चाय बनती है, हम जानते हैं. So black pepper is relieving the cough and cold. It's a very good antibacterial. So when the cough bacteria attacking on the body, creating the cough and cold, viruses attacking and creating the cough and cold, it helping a lot. So what we are doing, we are grinding, crushing the black pepper and taking with the honey. It's a very good remedy for flu, cough and cold. कफ एंड कोल्ड और फ्लू के लिए गजब का है. और अगर इसके साथ हम कुछ और भी ऐड कर दें, लाइक वी आर टेकिंग द हॉट वाटर एंड पुटिंग द यूकेलिप्टस ऑयल एंड टेकिंग द स्टीम, देन दिस इज विल बी गिविंग एडेड एडवांटेज. अगर किसी को सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड है तो 3-4 काली मिर्च को पीसकर हनी में मिलाकर चाट ले और यूकेलिप्टस तेल को पानी में डालकर उसकी स्टीम को इनहेल करे तो उसे बड़ा फायदा मिलता है. So taking the black pepper with the honey and taking the steam of eucalyptus oil, it's wonderful. So black pepper is very good in the vitamin C. It's a very good antibiotic. Black pepper is having piperine. I told you, piperine is one of the very good ingredient which is boosting your nervous system. So it's a very good for depression. ये डिप्रेशन के लिए गजब की दवा है ब्लैक पेपर. आपको कभी भी लो फील होता हो, आप ब्लैक पेपर को मक्खन में मिला के चाट लेना. Whenever we are feeling very low, just take the 3-4 black pepper, grind them, mix with the water and take it. Or if you are not having butter, you can take with the cream of the milk. दूध की मलाई से भी चाट सकते हो, आपको तुरंत अच्छा लगेगा. So the person suffering with the depression can do this. Black pepper plus water. So 3-4 black pepper, 1 teaspoon butter, can take it. And add it if the person is having regular depression. अगर व्यक्ति को लगातार डिप्रेशन बना ही रहता है तो फिर उसके लिए एक और भी सलाह दी जाती है. Then we are giving one more advice. If the person is having depression all the time, take the badam rogan oil from the market, from the Ayurveda store, and putting 2 drops morning evening in the nostrils every day for minimum for 1 month, and taking the black pepper with the water every morning, then can see the great results in the depression. Depression में बड़ा गजब का फायदा मिलेगा. What is depression? Depression means low level of dopamine hormone. हमारे शरीर में जब डोपामिन हार्मोन कम हो जाता है उसी को हम डिप्रेशन की संज्ञा देते हैं. तो डिप्रेशन को दूर करने का तरीका है कि डोपामिन को बढ़ाओ और हम इन माध्यम से ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं. वी कैन बूस्ट द ब्रेन. So there is a very good remedy for the headache and we will see the result in the headache immediately. So we are taking the black pepper, 2 to 3 black piece of the black pepper, grinding them. And there is one medicine of the Ayurveda that is called Godanti Bhashma. It is the powder which is coming in the market, which is white in color and which is very, very economic. Like one packet of 10 grams, maybe 20-30 rupees or so. It's very economic. So Godanti Bhashma,
Godanti Vashma is made by one stone. It's looking like white. So what we are doing? We are taking this half gram Godanti Vashma and 2 to 3 pieces of the black pepper and taking 1 teaspoon water, mixing them, taking every morning. You will see within few days migraine headache will not be there at all. सिर दर्द चला जाएगा, फिर होगा नहीं। और कभी बहुत हो रहा है ये ले लीजिए, और बहुत ज्यादा हो रहा है तो गोदंती भस्म आधा की बजाय 1 ग्राम कर दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गोदंती भस्म इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द बोन हेल्थ. It's not only good for headache, it's also very good for the bone health. It's having good calcium. So taking the Godanti black pepper with the water is the very good remedy for the migraine headache, severe headache. तुरंत चला जाएगा सिर का दर्द. अगर रेगुलर हेडेक होता है तो एडिड थिंग्स, put the cow ghee 2 drops in the nostrils. 2 बूंद गाय का घी नाक में डालने से, प्रतिदिन नाक में डालने से बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं कि नासा ही शीर्षो द्वारम, नाक ही सिर का द्वार है. अब नाक में डालोगे तो असर होगा सिर में, बाकी सिर तक पहुंचने का तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन नाक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है. आप नाक में डालेंगे गाय का घी, इसका असर होगा आपके ब्रेन पर. सो पुटिंग द cow ghee in the nostrils will boost the brain, because nostrils are the gate of brain, gate of head as per the Ayurveda. If you want to reach till the brain, till the nervous system, you can reach with the help of nostrils. So putting the 2 drops cow ghee in the nostrils every day will boost your brain. If you are doing this every day, within the span of 3 months, your nervous system, your brain, your dopamine, your happiness will be increasing. अगर आप कुछ महीनों तक 2 से 3 महीने प्रतिदिन गाय का घी नाक में डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती जा रही है. तो गाय का घी नाक में डालना, गोदंती भस्म का सेवन करना काली मिर्च के साथ और बटर के साथ, ये सिर दर्द की बड़ी अच्छी दवा है. सो ब्लैक पेपर इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस. ये वजन घटाता है. इट्स वंडरफुल फॉर वेट लॉस. I already told you that taking the black pepper is very good for the weight loss, like we give to the thyroid patient. So we can give the black pepper, or we can give the combination of 3 pungent herbs. One is the dry ginger, second is the black pepper, and third is the long pepper. Mixing all the 3 pungent herbs in the equal quantity, making the powder. This is called 3-katu. It's a wonderful for weight loss. So it can be used for the weight loss, whether the weight loss because of some other reason or because of the thyroid. चाहे थायराइड के कारण हो चाहे किसी अन्य कारण से हो, सभी में बहुत इसका ब्रिलियंट इफेक्ट है. इट्स ए वंडरफुल. एज सून एज यू टेक दिस, इट विल डू लिटिल परस्पायरेशन. ये पसीना निकालेगा शरीर से, फालतू का वाटर रिटेंशन निकल जाएगा. इट विल ओपन द पोर्स, ब्रिंगिंग शाइनिंग इन योर स्किन, and unwanted water retention will be removed. So it's a really very good. The pinch of black pepper will be boosting your shape of the body. The black pepper is very good for skin. So we can take the little black pepper. ये हमारी स्किन के लिए बड़ा गजब का है. तो हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर लेकर और इसे किसी चीज में मिलाकर हम जब स्किन पर रब करते हैं, तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया, हनी में मिलाकर स्किन पर रब किया तो स्क्रबर का काम करेगा, या दही में मिलाकर स्क्रब किया, या किसी क्रीम में मिला के स्क्रब किया. सो व्हेन वी आर टेकिंग द ब्लैक पेपर and mixing with the honey and scrubbing over the skin, or mixing with the curd, or mixing with the cream of milk, and we are rubbing over the skin, it's bringing the shininess in the skin. It's removing the dead cells from the skin. It's removing the unwanted depositions from the skin. ये हमारी चमड़ी में से फालतू की चीजें हटाकर ताकि स्किन को बहुत भरपूर ऑक्सीजन मिलने लगता है और स्किन अच्छी होने लगती है. It is very good for vitiligo,
means सफेद दाग, white spots over the skin. It's very good for all types of the skin disorders. It's very good for the pigmentation and the patches over the skin. हमारी स्किन में पड़ने वाले सभी दाग धब्बों के लिए ये गजब का काम करता है. It's a very good for that. So taking the black pepper applying over the skin is wonderful. तो चलिए अब हम बात करेंगे अगले स्पाइसेस की कल. Now enough for today. आज के लिए इतना काफी है. Thank you. Closing now.